A very warm good morning to all of you. This is Kumar, Roshan, STNC, Mother Teresa Tots Initial School, Surya Mandir, Jolbigaha, Pothahi, Punpun. Okay, Patna. Okay, so as you all know that our in-house training is in progress and we are near to our competition, and so that we have chosen a wonderful person this time. He is very calm, composed and someone like divine. So he is going to acknowledge you with the deep knowledge of value education. So as we know that from early times only, value education is part of our teaching life, a part of our teaching syllabus, because without understanding the value of education or without understanding the value education, a student cannot become a good person. So to be a good person, he is required to be a good person all over. So for this, I invite our resource person for today, Mr. Suraj Kant Mishra, to come and start the topic on value education. Sir, the dice is yours. Good morning, all of you. Good morning, Kumar, Director Sir, Honorable Teachers, and all dear friends. I am here to give something about the importance of value education. Education without value is just like a body without the soul. The value education gives the new shape, not externally but also internally. It provides a new era and new circumstances. Mostly people we are getting the deviating from own path. Okay, they are getting education. They are getting qualified, highly qualified things. But one thing is certain, that is education without the value. Education with the value just teach the person in the proper way. It gives the value of life, value of individual, value of society, value of country, value of global world. Today we are living in the global world. It means there is no any distance is there. The credit goes to all the information technology. If you are using this technology in the positive mind, in the positive way, then our life becomes sourceful and also useful. I want to say the government of India also gives a special thrust. The values must be given to a student. The value must be provided to a student. So they become the real resources of coming generation and for the country. As we know, child and children are the wealth of the country. If they are well equipped, well trained, well behaved, well enhanced, definitely it will be fruitful to our country. Our government has tried to give the new dimension to the thought, to the idea, to the new looking. It may be provided by the education is a positive, if education is a constructive, if education is enhancing, if education is a technical, if education is a commercial, if education is a job oriented, then we may see that education is a value education. It gives the value of man, each and every individual.
the demons of modern world dominating us, it is due to the lack of the value. So our intensity should be, education must be added. So I want to say that the actual practical application of value education of your life. If you want to say the education decorate the human being, decorate the mind of person, decorate the mind of children, then value education, it gives these are all qualities, the totality. They realize the importance of their own and the surrounding things happening. Value education is a part where the children, when become the citizens of the country, they must be take care of their own senior generation. Otherwise, they will just be attached to the vested interest. मूल्य आधारित शिक्षा किसी के जीवन को उसके आयामों के साथ जोड़कर उसके भावनाओं से पूरे विश्व को संजो सकता है, जोड़ सकता है, जिससे कि लोगों के दिमाग में आए कि वास्तव में शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा क्या है। जीवन के मूल्य बहुत, ईमानदारी। आजकल देख रहे हैं हम लोग देश को विभाजन करने वाले तत्व, देश को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व, मानवता के खिलाफ जो घातक बन चुके हुए सभी तत्व हमारे यहां विद्यमान है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा अर्जित की है, बहुमूल्य शिक्षा अर्जित है, लेकिन वो शिक्षा मूल्य आधारित नहीं, जिसके कारण हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुनना पड़ा है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसके नतीजा ये है कि हम उन्हें जो शिक्षा दी गई वो शिक्षा मूल आधारित नहीं थी। अगर वही शिक्षा राष्ट्रीय युग, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ईमानदारी, समर्पण के साथ जुड़ी रहती तो ये इनके मुखार बिंदु से ये कथन कभी उद्धृत नहीं होता है। कहा जाता है कि तुम ये मत सोचो कि देश ने तुमको क्या दिया, तुम ये सोचो तुमने देश को क्या दिया। ये तभी आ सकता है जब मूल आधारित शिक्षा हमारे दिमाग। Don't think what the country has given to you, but you have to be calculate what you have given to the country, because the country, this type of feeling may generate when you are thinking positively. The thinking positively may be done only this way. If you are educated with the values. घर में बताया जाता है कि बेटा ईमानदारी सबसे सर्वोच्च नीति है, कहने को बहुत आसान है, लेकिन उसको अनुसरण करना सबसे ज्यादा कष्टदायक, क्लिष्ट और भाव रहित हो जाता है। अगर हम लोग ये कहते हैं, कोई चीज बताते हैं बच्चों में, तो पहले उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। एक दफे की बात है कि एक महिला महात्मा गांधी के पास जाती है, महात्मा गांधी से कहती है कि हे बापू, मेरे बच्चे में कुछ अवगुण है, उस अवगुण को दूर कीजिए।
15 दिन बाद वो महिला गई। जब महिला गई तो गांधी जी ने कहा कि देखो बेटा, मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कम खाओ। तो भद्र महिला ने महात्मा गांधी से कहा कि हे मान्यवर, आप ये कथन तो पहले भी कर सकते थे, आज क्यों कहें? बोले कि देवी ऐसा बात है कि पहले इस अवगुण से हम भी, हमारे अंदर भी समझ, पहले 15 दिन में इसको हटाएं, उसके बाद। वैसे भी आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, हम सभी लोग उनको अपने कथनों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि वैसे महान विभूति हमारे बीच नहीं रहे। और एक बात ये ध्यान डाल के सुनने की आवश्यकता है, जितने महान, जो भी महान बने हैं वो अपने मूल्यों के कारण बने हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा मूल्य आधारित थी। अगर हम इस बात को अनुसरण करें, चाहे त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग, सभी में सभी महान बने हैं, क्योंकि उन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा को अनुसरण किया। Because they adopted the value education, so they become the great. They never thought about the vested interest, self-interest, selfishness, greediness, but they do something else. I want to say you, all of you, that means the role of value education is more than whatever we think in the modern time. आधुनिक युग में भौतिकतावाद में हम लोग इतने समाहित हो गए हैं, जिसके कारण एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि 1058 में, हाँ, इस बात को वन थिंग दैट, जो भी हमारे बीच में महापुरुष आए हैं, वो सभी मूल्य आधारित जीवन को समर्पित करके ही आए हैं। अगर मूल्य आधारित जीवन उसी तरह है जैसे कि विवेक बिना मान, तो इसका हम लोग, नाउ आई वांट टू से whatever we are getting, learning from the great personalities, Lord Rama, Lord Krishna, Buddha, Mahavira, Gandhi, Mandela, these all are given, sacrifice entire life for the betterment of coming generation. It is the due to credit goes to the value. Lord Ram sacrificed the whole life for the other. Lord Hanuman sacrificed his whole life for others, but never run behind the credit. They all give credit to others. Lord Rama sacrificed the whole life, never thought about the vested interest. Lord Krishna whole life fought against the ill practices of the society, bad things of the society, but never compromised their own principles. Once upon a time, the situation emerged. About 1,25,000 children deviated their own path. They also punished them. It means value play dominant role to decorating the life of an individual. शुक्रात के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सत्य के लिए विष को पान किया,
लेकिन झुके नहीं। और शुक्रात से संबंधित एक तथ्य हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि शुक्रात जो कि बहुत ही बदसूरत थे, उनके चेहरे में बहुत सारी दाग लगी हुई थी, काले काले दाग। वे रोज आईना के सामने बैठते थे, विचारते थे। उनके एक शिष्य ने उन पर टिप्पणी करते हुए कह दिया, गुरुवर, जब आपकी चेहरा इतनी भयावह है तो आप ऐनक में बैठते हैं, अगर आपकी चेहरा खूबसूरत रहती तो क्या करते? उन्होंने जवाब दिया, देखो बाबू, मैं जानता हूं मेरा चेहरा बहुत भयावह हो, मैं इसलिए बैठता हूं जिससे कि लोगों को ये पता चले, लोग ये जाने, इस बात से पूर्ण रूप में अवगत हो जाए कि भाई इतनी बदसूरती को छिपाने के लिए कितनी अच्छा काम किया जाए कि छुप जाए। ये विचार उनमें कहां से उत्पन्न हुआ? ये विचार उनमें उत्पन्न हुआ मूल्याधारित शिक्षा से, जो कि उनके अभिभावक ने उन्हें प्रदान की। जितने अवगुण हैं जो समाज में पनप रहे हैं, आज की पीढ़ी नए आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गई है। सम्मान करना भूलने के पीछे कारण ये है कि उनकी जो शिक्षा है आर्थिक प्रयोजन है, भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, सभी त्रस्त हो गए हैं, कोई कामनाएं नहीं रह गई है। इस कारण से पूरी तरह से वे लोग स्वच्छंद हो गए हैं, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिन पर कोई अनुशासन, इसके पीछे कहा जाता है कि स्व अनुशासन ही सबसे बेहतर अनुशासन है। ये आएगा कहां से? ये शिक्षा से ही आएगा, शिक्षा के मार्फत से ही आएगा, शिक्षा के द्वारा ही आएगा। और आज इसको करेंगे कौन? इसको करने वाले जो आधुनिक शिक्षक वृंद है, जो आधुनिक समर्पित शिक्षक हैं, जो आधुनिक पूर्ण रूपेण मूल्य रहित, आर्थिक मूल्य रहित शिक्षक है, वे इसका। और ये जरूरी है कि तमाम बच्चों में इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे कि राष्ट्र के लिए सही मायने में वे मूल्यवान स्रोत बन सके और राष्ट्र को वास्तविक मार्ग प्रदान करें, अपने अंदर के अवगुणों को खत्म कर सके। और हमारे अंदर जो 5 प्रकार के अवगुण हैं जो कि हमें विनाश की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। कहा भी गया, तुलसीदास ने भी कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नाथ नरक के पंथ। यानी कि ये जो 5 तत्व हमारे अंदर, पांचों पर हमें नियंत्रण मूल्याधारित शिक्षक के द्वारा कर कोशिश होनी चाहिए कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा लोगों के कल्याण के लिए हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए हो, मानव उत्थान में हो, मानव के कल्याण निर्माण के लिए हो। और फिर हम लोग इसी आधार पर इसको कह सकते हैं शिक्षा से ही सब कल्याण हो सकता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? अंधकार हम लोग मिटाते हैं शिक्षा के द्वारा। इसीलिए कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी कि शिक्षा से ही हम लोग अंधकार रूपी दैत्य को समाप्त कर सकते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा
इससे पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से समर्पित होकर एक दूसरे की भावनाओं को आदर करते हैं और इसके बाद हम लोग वास्तव में क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए जिससे कि राष्ट्र निर्माण व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो सके, जिसके द्वारा हम लोग भूखमरी और बहुत हद तक जातीयता में जो समाज विखंडित हो रहे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। भावनाओं, दूसरे की भावनाओं को समझकर उनके विपत्ति समय में उनका साथ सहयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग बहुत कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आने वाले पीढ़ियों की जरूरी है। देखना यह है कि जो हमारा धरती है ब्रह्मांड में सबसे अनोखी सुंदर, उसकी सुंदरता को कैसे बरकरार रखा जाए। उसको बरकरार रखने के लिए पहले हमें उसको समझना पड़ेगा कि उसको क्या क्या चाहिए और कैसे उसको हम लोग और बेहतर करें। इट्स द ड्यूटी to the each and every citizen of not only particular country, it's the particular world, whole world, to educate their coming generation in the proper way. That is the art, is that source that gives you the new dimension and direction to our life. Art is just decorate our life in positive way. Art is just assign our life in the positive. But we should be followed. It's as we know, mother is called the first teacher of individuals. It's the prior duty of the mother to give the value education to come on generation. As we know, if the male educated, it means the individual. With the family educated, it means the whole family educated. Mother is called the first teacher of the child. Behavior of child reflects the images of family, parents, their family. माता अगर अपने बच्चे को शिक्षा देती है तो इसमें ये पता चलता है कि वह पूरी तरह से समर्पित हो जाता है गुणों के प्रति। माता बच्चे को सिखाती है बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चे के दिमाग में जाएगा हाँ माँ सही कर रही है। अगर इसको अनुसरण कर ले बहुत सारी समस्या समाधान हो जाएगा। और इसी बात को समर्पित करते एक कथन कहा जाता है कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते, तो उन्होंने माँ को बनाया, माँ के द्वारा ही अच्छे संस्कार बच्चों में आने की भावना होनी चाहिए। That I want to say you in the traditionally people said that the education which is just started from mother and it goes to the generation by generation, that will be better for our society and life. मूल्यों के शब्द हुआ भाईचारा। भाईचारे का मतलब टू टेक केयरिंग ऑफ अदर। दिस feature coming from the moral
If you are caring the coming generation in the proper way, you may say that is the best form. How it will happen? It may be happen when the education is going in the systematic way and the positive way. The values dominated all. Again, it will also promote the element of the brotherhood. भाई बंधुत्व की भावनाएं अंतर्निहित होती है। एक दूसरे पर लोग ध्यान देते हैं, ख्याल करते हैं और उसके बाद वे सही दिशा आयाम को प्रदान करते हैं। समझने के लिए ये बात की आवश्यकता है कि हम कितने समर्पित हैं अपने क्रियान्वयन पे और अपनी कार्रवाई पे। Little prayer. I am here to also introduce you the quality of value education and the role of the life. एक बार इसी में कहानी कहा जाता था कि एक आदमी की मूल्य आधारित शिक्षा से उसका जीवन कैसे बना, इस पर देखना है। एक बार एक आदमी था जो कि ऑफिस जाता था, अच्छे पद पर था, दरबार को भी गुड मॉर्निंग बोल देता था। वैसे तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग इसको अनुसरण करें, लेकिन वो करता था, आते समय जाते समय। और ये दरबान भी इस बात को पूर्ण रूप में अवगत था। एक बार क्या हुआ, वो काम करने में लीन रहा, ऐसा लीन रहा कि उस समय को पता नहीं चला। सभी संगे साथी वहां से निकल गए और निकलने के बाद ताला वगैरह बंद हो गया। जब उसको पता चला 8 बजे रात को कि भाई ताला बंद हो गया है, अब कैसे निकला जाए, क्योंकि उसके सामने उस समय कोई चलनगामी दूरभाष यंत्र भी उसके पास था, दबाव रही था। अब बेचारे इसमें बहुत चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। जो दरबान था, जिसको रोज हुए आने के समय गुड मॉर्निंग और जाने के समय गुड बाय कहता था, उसको लगा नहीं हुआ सर तो नहीं गया, क्या बात है भाई। तो उसने अपने चाबी से उसको खोला दरवाजा, जाकर देखा कि वो आदमी वहां पर, तो फिर उनको लेकर आया। यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा से उस आदमी का जीवन बच गया। तो कहने का मतलब है कि मूल्य आधारित शिक्षा अगर हम लोग रहे हैं तो व्यक्ति का निर्माण के साथ व्यक्ति को उसके अवयवों और कृत्यों को प्रदान भी करता है, उसको पुरस्कृत भी करता है। इस बात से हमें पूरी तरह से अवगत होना चाहिए कि ये शिक्षा हमारे शरीर को आंतरिक के बाहर पूर्ण रूपेण साकार करता है, पूर्ण रूपेण निर्माण करता है, और पूर्ण रूपेण कुछ नई आयामों को अंतर्निहित करता है। तो यही बात, that same point I want to say that the role of value education and the individual life, that roles are nullified. No one can say this role is not being fulfilled in the proper way. But I want to say one thing, the role of value education is the really very positive, not for us, but also the whole mankind. God sent us to do some positive value, positive work and positive norms. But I want to say, this type of value should be designated from moral life. I want that of God, where that is very positive in our life.
it may also give some positive thing, positive demand of the society. But one thing is there, whatever we're doing, our action depend upon the education of surrounding, education of the society, education of the country, and education of the individual. So my friend, also I want to say, life is going on, but it depends upon the degree of movement of the life. One thing is there, life, you are enjoying the life, but if you are enjoying the positive way, it gives the real essence, real sacrifice, and real achievement of it. जितनी भी महान विभूति हैं हमारे बीच में प्रस्तुत हैं, वे सभी ऐसा कार्य किए हैं और कार्य के पीछे उनके मूल्य आधारित शिक्षा ही है। और वही मूल्य आधारित अगर शिक्षा हम लोग अपने पास रखते हैं तो हमारे जीवन के बहुमूल्य अवयव को सुचारित रूप से संचालित करते हैं। One thing that is the very important factor of the person's life. How it is the positive, how it is the decorative, how it is the useful, not for individual, for the society. जीवन को सफल बनाने के लिए मूल आधारित शिक्षा का बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चे इसको शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो उनके जीवन सफल रहेगा, उनके अभिभावकों का सपना पूर्ण होने की संभावना है और वे एक अच्छे नागरिक के तौर पे आने वाले समय में सही रूप से कोई सार्थक हो। इसी संदर्भ में हम अपने विचारों को आगे करते हुए हम चाहेंगे हमें कि सतेंद्र सर इस पर कुछ अपना वक्तव्य जारी करें और इसमें कुछ अपना विचार प्रस्तुत करें जिससे कि नई तरह की और आभाएं मूल्य आधारित शिक्षा में आ सके। दैट इज द added the more value in the value education system. Please welcome our Shabindar sir. Thank you, sir. The value of education is the most important in this situation क्योंकि एजुकेशन जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए हमें गहरी रूप से इस पर ध्यान रखना है। बिना एजुकेशन के हम लोग आगे की ओर विकास नहीं कर सकेंगे। अतः हम सभी विद्यालयों को चाहिए कि गार्जियन को उत्प्रेरित करें
जिससे कि शिक्षा का विकास हो, इसका महत्व बढ़े। अतः हम लोग सभी मिलकर एक साथ एकजुट होकर इस वैल्यू ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। इसके बाद गार्जियन को, पेरेंट्स को हमें अपने विद्यालय में बुलाकर, इनवाइट कर उन्हें उत्प्रेरित किया जाए, ताकि एजुकेशन के क्षेत्र में विकास हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ मिश्रा सर को आकर इसको पूरा करें। थैंक यू। Once again, thank you, Shatendra sir, for delivering their own view. I am also supported the idea of the Shatendra sir. This type of environment may be started by collaboration of teacher, parent and school. So, each and every school should try to effort in that way, so moral education must be inculcated in the mind of the student. For this purpose, there should be regular meeting should be done between the teacher, parent, because mostly students wasted 6 hours in the school and 17 and 18 hours with the parent. If the both join, they may give the new idea, new hope and new potential to start inculcating the real value in coming generation. As you know, child and children is just like a child and children of this country is just like a clean brain. The brain is totally clean. And it's our responsibility to fill the element so they may move in the proper way. So their life becomes simpler. That they realize the importance of brotherhood, importance of the parent love, importance of the teacher care, importance of the surrounding, importance of the neighbor, importance of the ecology. Atmosphere. It all has to be done when a student moves in the positive way, and the entire credit goes to the whole community, whole society. If they are collaborating to give the new direction to the coming generation. And this may be done through only one way, to educating the morally, educating with the value, educating with the theme, new theme, educating with the proper. The time has come that in the traditional pattern must be torn up with the current technology and the current environment. If they are toning up, the new
situation arises and new situation arises, it gives the new face, new idea, new hope to them. हम लोग ये मानकर चले कि भाई प्राचीन Now you are in this end of this session, concluding part of this session of the moral education. I would like to call our respected Arun sir to give their own valuable advice in this session, so that means it become the more productive for current generation students and their life become the more. Please give big hand to the Arun sir. Over to Arun sir. धन्यवाद आदरणीय सूरज कांत मिश्रा सर। जहाँ तक कि नैतिक शिक्षा का बात होता है तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी चीज आती है, लेकिन नैतिकता एक ऐसी चीज है जिसके तहत आप किसी भी जीवन को सार्थकता का भाव, आप नैतिक मूल्यों को अपने अंदर में अवलोकन करने के पश्चात जान सकेंगे। जैसा कि जानते होंगे कि हर जीवन में हर कुछ करने के लिए एक न एक नीतिगत भाव होनी चाहिए और इन भावों को समाकलन या इन भावों को लाना और इन भावों को अपने बच्चों में भरने के कार्य हम लोग के अंतर्गत आता है, क्योंकि सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे शिक्षकों को यह बताना चाहता है कि सबसे प्रथम कि आप नैतिक मूल्यों को बच्चों में भरें ताकि वह नैतिकगत कार्यों में विशेष रुचि देकर और तब अपनी शिक्षा का जो भाव है उसको सही ढंग से माने प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई बच्चा जो है यह संस्कार जो नैतिकता के अंतर्गत ही आता है। सर्वप्रथम यदि बच्चा उठता है और सुबह अपने माता पिता का अभिवादन नहीं करता है तो उसमें भी उसकी नैतिकता की कमी होती है। संस्कृत में भी कहा गया है और व्रातम श्रेष्ठ वित्तम उपसे चत्वारि वर्धे आयु विद्यालय सोलम, अर्थात जो बच्चे प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता अपने बड़े बूढ़ों को नमस्कार करता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है, उनकी आयु विद्यायस और बल की वृद्धि हो जाती है। तो इन संस्कारों को बच्चों में लाना या एक नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। और आदरणीय मिश्रा सर। Once again, I am giving the thanks to our Arun sir to give me the valuable point related to the valuation. That is the concluding feature. Once again, I am calling our respected, highly qualified, Roshan sir to give the concluding part of this speech. Please give big hand to the Roshan sir. Okay, so thank you, sir, for this wonderful training on the topic value education. And once again, I would like to heartily congratulate each and every one of you who have got benefited from these all topics. And hopefully, will recommend that once again, after completing your session or having a lunch, the second session will also be given by Mr. Sir for today's training topic. So he will give you the second topic also, second training also today only. So don't go anywhere and be ready for the topic for today also. Okay. So after this, you are getting some assignment questions and you can have a lunch afterwards and then come back to the return session after 1.5 hours. Okay. So thank you and have a nice day.